हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला ऑफ nth पावर ऑफ कोसाइन x। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको लेट कर लेते हैं कि आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ nth पावर ऑफ कोसाइन x। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि कोसाइन की nth पावर ऑफ x को हम एक पावर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। कोसाइन की पावर क्या हो जाएगी, n-1। और इक्वालिटी का अगर एक पावर कम की है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ x। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये n पावर है टोटल, इसको हमने एक पावर अगर कम किया तो वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो n क्या है, बेसिक सेम पावर ऐड, तो ये n का n रहेगा। तो यहाँ से इंटीग्रल का साइन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल दिस। तो हमारा आई एन इसके इक्वल हो गया। अब हम इसको मान लेंगे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। फिर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो जो क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है, वो इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद होल इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन करेंगे। और हियर हमारा जो फर्स्ट फंक्शन क्या है, n-1 पावर ऑफ कोसाइन x, और सेकंड फंक्शन क्या है, कोसाइन ऑफ x। तो इम्प्लाइज दैट हमारा आई एन किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विच इज n-1 पावर ऑफ कोसाइन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड विच इज कोसाइन ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज कोसाइन की पावर n-1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ second function which is cosine of x dx, then integration which is equal to, this is cosine की power n-1. What is the integration of cosine of x, is sin of x minus डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन की पावर n-1। इसको अगर हम x मान लें तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, सबसे पहले पावर आ जाएगी बेस में, और कोसाइन की पावर n-1 जिसको हमने x माना है वो क्या है, फिर से बाय चेन रूल डेरिवेटिव किसकी होगी, x, जो कि हमारा x क्या है, cos x। और व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ x, जो क्या रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ x, और लास्ट में dx which is equal to कोसाइन की पावर n-1 साइन x माइनस n-1 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ x की पावर n-2। एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ x, विच इज़ माइनस साइन ऑफ x। एंड व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ x, विच इज़ साइन ऑफ x dx, विच इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा, this minus into minus, this becomes plus n-1 integration of cosine of x की, cosine की power n-2, sorry, this becomes sin x into sin x, sin square x dx. Now we know that from triangular inequality sin square x is equal to 1 minus cosine square x. use this, ये एज इट इज रहेगा, कोसाइन की n-1 पावर
sin x, this becomes plus n minus 1 integration cosine kn minus 2 power 1 minus cosine square x dx, which is equal to n minus 1 power of cosine x sin x plus n minus 1 n minus 1. Now multiply this cosine, it becomes cosine kn minus 2 power x dx minus n minus 1 integration of cosine की power n minus 2x cosine square x dx. Which is equal to cosine की power n minus 1 sin x plus n minus 1 cosine की power n minus 1 n minus 2 x dx minus n minus 1 integral of, this is same, then exponents gets added, minus 2, this is plus 2 becomes 0, it becomes cosine nth power of cosine x dx. And what is this nth power of cosine x? This is our in, and it is equal to cosine की power n minus 1 sin x plus n minus 1, this is cosine की power n minus 2. Our in is equal to integral of nth power of cosine x, then n minus 2 integral of this space represent is equal to integral of n minus 2 power of cosine x dx, and it becomes I n minus 2, and this is minus n minus 1, and this is our in. Now adding n minus 1 times in on both sides, we have minus n minus 1 n minus 1, it becomes 0 because n minus 1 times in plus n minus 1 times in, this is negative, this is positive, this becomes 0. Now in plus multiply this becomes n times in minus in, which is equal to cosine की n minus 1 power sin x is plus n minus 1 in minus 2. This is minus in, this is plus in, this becomes 0, implies that n which is equal to n times in equal to cosine की power n minus 1 sin x plus n minus 1 times n minus 2. Now multiply both sides by 1 by n minus 1 sin x plus n minus 1 times in minus 2 implies that
this n gets divided by this n, it becomes 1, and our in is equal to sin x cosine की n minus 1 power n plus n minus 1 by n in minus 2. Which is the reduction formula of cosine and power dx.